नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की मुख्य सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विपक्ष को भारत के कूटनीतिक रुख की देंगे जानकारी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठकों का दौर जारी। केरल में चुनाव अभियान की राहुल गांधी करेंगे शुरुआत। पंजाब में महीनों से फरार आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा गिरफ्तार। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में पटियाला पुलिस ने की कार्रवाई। 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आ रहे विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद। 10 लोग हुए गिरफ्तार। ईरान का इजरायल समेत खाड़ी देशों पर ताजा हमले। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के दावे के बीच ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए हमले। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया है, जो LPG, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरलम में एक कार्यक्रम पहले से ही तय है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने कई पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। इस दौरान सरकार ने अपनी नीतियों, विकास कार्यों और देश के सामने मौजूदा मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। लोकसभा में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए देश की बिजली व्यवस्था पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 नेशन 1 ग्रिड नीति के कारण आज भारत की पावर सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर हुई है। पहले जहां लगभग 250 गीगावाट बिजली उत्पादन होता था, अब ये बढ़कर करीब 500 गीगावाट तक पहुंच गया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सुधार के चलते बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति से बचाव संभव हुआ है और देश की ऊर्जा व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनी है। 2012 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका 1 ग्रिड 1 नेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट सर 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था। आज के दिन में 506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया है कि कोविड महामारी के बाद देश भर में 1024 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। उन्होंने प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी दी कि पुरानी ट्रेनों की क्षमता बढ़ाते हुए उसमें 4651 अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए हैं। रेल मंत्री के अनुसार वर्तमान में कुल कोचों में से 70% कोच जनरल और स्लीपर श्रेणी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे की क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 85,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियां देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें 4,651 कोच ऐड हुए हैं। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है, जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला, उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और अब खबरें आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जनादेश में। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि AIADMK ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव एद्दापाड़ी के पलानीसामी फिर से अपने मजबूत क्षेत्र एद्दापाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। उप महासचिव के P मुनुस्वामी को वेपनाहल्ली से मैदान में उतारा गया है। कोषाध्यक्ष डिंडिगुल C श्रीनिवासन डिंडिगुल से, जबकि पूर्व मंत्री CV षणमुगम को मायलम में स्थानांतरित किया गया है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर स्थित EVM वीवीपैट भंडार गृह से मशीनों को विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया। त्रिची से 9 निर्वाचन क्षेत्रों और रानीपेट से 4 सीट के लिए EVM और कोयम्बटूर से 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए EVM वीवीपैट भेजा गया। इस दौरान इरोड जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि हमारे पास EVM का आरक्षित भंडार जरूरत से 20% ज्यादा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने की शिकायत पर CEO ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस संबंध में सभी DEO से 23 मार्च तक लिखित जवाब मांगा है। राज्य में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसरों का डेटाबेस तैयार करने में संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगने की शिकायत के बाद CEO ने सभी DEO को आगाह किया है और कि नियमों का पालन करें, और उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 26 के अनुसार चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाना प्रतिबंधित है। इसलिए चुनाव तैयारी में संविदा कर्मियों की ड्यूटी न लगाएं। CEO ने निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अलग अलग सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य में चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। इसका उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से लिखित में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों का उपयोग न हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता में आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां काली के दर्शन कर देश की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाज़त मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन टीम और विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ जीत की रणनीति साझा करेंगे। दोपहर में वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय चर्चा होगी और फिर न्यू टाउन में नवद्वीप जोन की बैठक का समापन होगा। इससे पहले मंगलवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने डिजिटल पहुंच और बूथ नेटवर्क मजबूत करने के लिए बंद कमरे में कई अहम बैठकें की थी। आपको बता दें कि बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है।
इसके साथ अगली खबर का रुख करते हैं। लोकतंत्र की नींव युवाओं के वोट पर टिकी है और चुनाव आयोग इस बात को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोलकाता में पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए एक खास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कॉलेजों के छात्र छात्राओं को मतदान की प्रक्रिया, उनके अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बताया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस उन युवाओं पर था जिन्होंने हाल ही में 18 साल की आयु पूरी की है और पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोलकाता के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और बूथ लेवल अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्हें मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण और मतदान के नैतिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। Free and fair poll is our motto. We'll have to conduct it as free as possible, as fair as possible. And you know, your one vote is very important. There are instances in India, in Rajasthan, a declared chief minister candidate lost his election by one vote. बूथ लेवल अधिकारी और विभिन्न कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। हॉल में उत्साह का माहौल दिखा। इस जागरूकता सत्र के दौरान मौजूद युवाओं की शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें ये समझाया गया कि उनका वोट लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान मतदान प्रक्रिया, वोटर पंजीकरण, ईवीएम का इस्तेमाल और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मतदान पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वोट सिर्फ एक कागज पर निशान नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। फेस्टिविटीज़ अराउंड द सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस, इस मोटो के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस हर डिस्ट्रिक्ट में स्वीप इवेंट कराएंगे और अपने वोटर्स और अपने सारे स्टेक होल्डर्स को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उन्हें नज करेंगे अबाउट देयर इम्पोर्टेंस ऑफ वोट। चुनाव आयोग की इस पहल से छात्रों को मतदान के महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से मतदान करने का संकल्प लिया। चुनाव आयोग का ये कार्यक्रम आगामी चुनावों को लेकर एक अहम कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि हर मतदाता को लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग से जुड़ी भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया की अफवाहों पर कड़ा संज्ञान लिया है। पीआईबी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में सरकार ने स्पष्ट किया है कि रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों और समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि उज्ज्वला योजना और सामान्य कनेक्शन के लिए बुकिंग के दिन बदल दिए गए हैं, जिसे सरकार ने पूरी तरह से फर्जी बताया है। सरकार के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि रीफिल बुकिंग की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही सिलेंडर रीफिल किया जा सकेगा।
कनेक्शन का प्रकार चाहे जो भी हो, यह नियम सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने आम जनता से यह अपील की है कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर बिल्कुल विश्वास न करें और घबराहट में बेवजह पैनिक बुकिंग करने से बचें। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में LPG का पर्याप्त और सुरक्षित भंडार मौजूद है। खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब की पटियाला पुलिस ने बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में फरार आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को ग्वालियर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पठान माजरा पर सितंबर में पटियाला के सिविल लाइन थाने में एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार पटियाला पुलिस पठान माजरा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो वे पुलिस पार्टी पर हमला करके फरार हो गए थे। 48 घंटे में पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। इससे पहले 23 मार्च को मंत्री लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी हुई थी। इधर लालजीत भुल्लर मामले में CBI जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल हथियार सप्लायर के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह के लिंक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के अवैध हथियार सप्लायरों के साथ है। बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। इस गिरोह के पास से 21 अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसमें पिस्टल, सब मशीन गन और ऑटोमेटिक पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके पास से कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें कुछ चेक रिपब्लिक निर्मित सब मशीन गन और पिस्टल भी शामिल हैं। इनमें तुर्की निर्मित PX 5.7, चीन निर्मित PX 3 और चेक निर्मित शेडो CZ के साथ इटली निर्मित बेरेटा, ब्राजील का टॉरस और जर्मनी का वॉल्थर जैसे विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली के करोलबाग इलाके में झंडेवालान मंदिर के पास देर रात एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। बस में लगभग 25 यात्री सवार थे। 12 लोगों को RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 मृतक शामिल हैं। 10 को गंगाराम अस्पताल और 1 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गुजरात विधानसभा ने कल 7 घंटे से अधिक चली बहस के बाद बहुमत से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले दिन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यह विधेयक सदन में उन्होंने पेश किया, जो राज्य सरकार द्वारा गठित पैनल की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के 1 सप्ताह बाद लाया गया। विधेयक के पारित होने के साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद UCC पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। बिल सब जाति जाति के लिए रक्षण करने के लिए आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और मैं पुनः एक बार ये बिल पूरे देश में दूसरा राज्य गुजरात राज्य है, ये बिल हमने पारित किया है। माननीय राज्यपाल की साइन होने के बाद ये अमल में आएगा और सरकार की ओर से मैं भरोसा देता हूं कि ये बिल आने के बाद हमारी बहनें वो सुरक्षित महसूस करेगी और कोई भी ऐसा होगा तो ये बिल में जो जोगवाई है उसके तहत उसको सजा मिलेगी। थैंक यू। गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को 7 घंटे से ज्यादा चली लंबी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया। इसके तहत सभी समुदायों और धर्मों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण और विरासत जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू किया गया है। बीजेपी ने इसे समानता सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जबकि कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम विरोधी है। तो विधेयक की मुख्य बातें आपको बताते हैं। विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं कि गुजरात सरकार का ये एक बड़ा कदम आया है। गुजरात विधानसभा ने UCC विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार में एकरूपता लाया गया है। लिव इन संबंधों की बात करें तो उसका पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य हो गया है। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके साथ जो विधेयक की मुख्य बातें हैं उसमें यह है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अब समान अधिकार मिलेगा। अनुसूचित जनजातियों पर कानून लागू नहीं होगा। उल्लंघन पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
निकाह हलाला जैसी प्रथाओं पर इस विधेयक के बाद अब रोक लग गई है। राज्य के बाहर रहने वाले गुजरातियों पर भी ये विधेयक लागू होगा। तो सरकार ने इस विधेयक को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बिल को ऐतिहासिक कदम बताया है और सीएम ने कहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी कानून के समक्ष समान हैं। अगर सभी धर्मों की बात की जाए और महिलाओं की बात की जाए तो उनको इस विधेयक के बाद समान अधिकार मिलेंगे। यूसीसी से धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाएगा। नागरिकों के बीच विभाजन और विवाद भी समाप्त होगा। आगे बढ़ेंगे। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी ने दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एआई और तकनीक विकास का माध्यम बन रहे हैं, उसी तरह इन्हीं देशों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उच्चायुक्त के अनुसार भारत और ब्रिटेन की एआई क्षमताओं को एक साथ लाने के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दोनों देशों ने हाल ही में इस क्षेत्र में अपने बेहतरीन काम का विश्व स्तर पर प्रदर्शन किया है। और इस समय लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधन दे रही है। सीधा रुख करते हैं। Can I? Yes, please. Please carry on. So thank you very much. I take this opportunity to reply on the debate which has been held on the finance bill itself. So nation building is a continuous process and it doesn't happen overnight. Every budget, every finance bill that we've come up with is a step towards the ultimate goal, and that is attaining Viksit Bharat by 2047 and fulfilling the aspirations of 140 crore Indian citizens. So, in this quarter of the 21st century, sir, India is moving from India is actually moving forward with reform not out of compulsion, which is what has happened earlier. Reform is not happening out of compulsion, but out of conviction, with clarity, confidence, and commitment. India is riding on the reform express under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And this finance bill of 2026-27, therefore, rests on 5 clear principles, sir. First one is there is a trust-based tax administration that is being improved upon. Actually, we are reducing unnecessary hardship for honest taxpayers. You can see various aspects of it in my response to various questions and clarifications sought by members. I will elaborate on it. Second, sir, the ease of living for common citizens. I was worried that some of our honorable members have started mocking ease of living and ease of doing business. It is important that we continue on that process. Every citizen should feel that this country doesn't really make it difficult for him by doing compliances, by seeking permits, by seeking quota, by seeking licenses for legitimate businesses. I thought it was from 1991 that all of us kept saying India has to become a lot more easy to live, a lot more easy to govern. So it was astonishing for me to hear some members talk about ease of living and ease of doing business as not so significant, not so important. I think it is important that we go on that route and make India a lot more easy to live. Third, sir. हनुमान बेनीवाल जी आप बैठिएगा। बेनीवाल जी आप बैठिएगा। Third principle, sir, we are empowering the MSMEs, farmers and cooperatives, because MSMEs, farmers and cooperatives are at the heart of creation of employment, for production and for overall development of India. So this
finance bill supports them with very many measures that improve liquidity but also reduce the compliance burden and give them the opportunity to have greater contribution made towards first their cooperatives and then the larger economy. Fourth, sir, making India a stronger global business hub. And that is why we've brought in clarity in very many provisions, taxation-related provisions, and I would elaborate on it. It supports key sectors such as digital infrastructure, electronics manufacturing, marine products, leather, critical minerals, nuclear energy, and so on, all of which are critical for India to speed up towards Vikasit Bharat. And the fifth one, sir, and the final, is to become seamless trade facilitation move and bring in customs reform. So very many provisions have been altered in order that we are able to provide greater trade facilitation. So with these just opening few words on the finance bill itself, I will now, by responding to honorable members, be able to elaborate on some of the features that are in the finance bill. Sir, to begin with, we had the Indian National Congress's member, Dr. Amar Singh, who I respect a lot because he's a trained economist who was heading Planning Commission in Punjab, who contributes to the debates in the South. But this time I feel he did not speak as an economist. He spoke more like a politician who's wanting to take a pot shot at the ruling party. I wish he had contributed to the debate with his wisdom, with his exposure to the field of economics. Whereas what he said astonished me. It can't come from him, but he said it, and therefore I have to respond. Sir, I'm just summarizing. He said, nothing is there for the middle class. You've done everything for big businesses. What an irony. I thought this finance bill has so much more for the middle class. If only I list out a few. I hope Dr. Amar Singh will concede that he was on a completely wrong track. Budget, sir, has slashed, this finance bill has slashed the TCS rate for pursuing education and medical purposes under the liberalized remittance scheme, the LRS as it is popularly known. It used to be at 5%, we brought it down to 2%, so that people who send money abroad for their children, middle class which borrows money to send their children abroad, will have lesser TCS to pay. Similarly, TCS on overseas tour packages, where people go on trips in a group, families together and so on. We used to have a TCS of 20%, now that's been brought down to 2%. Are the large corporates going on these kind of group trips? No, ordinary middle class families go. So that is one thing I want to draw his attention to. Second, completely we have exempted the basic customs duty on 17 critical life-saving drugs and medicines. Is this not going to benefit small families, ordinary citizens whose elder or family member is admitted in hospital and who have to buy these expensive medicines? We've brought down the basic customs duty to complete zero, exempted them from basic customs duty. Furthermore, duty-free personal imports of medicines, where your children are abroad, they are sending it for your upkeep, for your medicines. And food and special medical purposes food items, which come for people who are undergoing severe treatments, have all been extended to 7 additional rare diseases also. They have also been given duty-free personal imports. That, of course, will help middle class. Any interest, similarly, on the Motor Accident Claims Tribunal awards, any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, for instance, when it becomes delayed and the family of the accident victims are waiting for the payment, and when the payment comes, the interest is awarded by the tribunal, there was interest, there was a tax on it, that has also been completely removed. It is completely exempt. Is that not going to help people who are waiting for the insurance amount to be given back to the families of the affected party? We are proposing also to allow
taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated. Normally, after it is initiated, you're not allowed to correct your returns. We have allowed that, and at an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. So the assessing officer will then use this updated returns for further proceedings. It makes life easier for the taxpayer. So young professionals, students, and relocated NRIs often make inadvertent mistakes or errors in the budget, in their assessment when they file it. A one-time 6-month foreign assets disclosure of small taxpayer scheme has been brought in, whereby this small taxpayer can declare small overseas assets which are left undeclared till then, or even income up to 1 crore of rupees if it has been left without disclosure, and up to 5 crore of previously taxed but undeclared assets are now without any prosecutions to be faced. They can just declare and do the due process. There will be no prosecution after them. This will bring in great relief for small taxpayers who by chance, didn't know, inadvertently missed out on declaring amounts which are left in accounts abroad. Senior citizens and small savers will also benefit from a new single window system allowing depositories to accept Form 15G and 15H directly and distribute them to relevant companies, ending the hassle of submitted multiple physical forms of personal personal forms to avoid TDS or dividends. So instead of the tax assessee paying it to so many different agencies, the depositories can do on behalf of the taxpayers, particularly the senior citizens, and therefore this will be a relief. So very important, which will affect all passengers, all relatives, families, friends, even honorable members who go abroad and come back. We are rationalizing the passenger allowances, rationalization in tariffs on gifts, and also on personal imports, and simplification of personal effects. This reduces disputes at the airports. I normally receive a huge lot of day-to-day complaints of, I'm held back in Delhi airport, the customs official is not letting me go, I'm saying this is mine, they are saying no, this is new. All these disputes will be now over. We are increasing, in fact, rationalize it completely on every item that you can bring, and if you want, you take it back, if you want, you leave it. So the passengers now will have far less to worry about when they land in India. Then finally, sir, digitization of temporary imports and exports of valuables, including jewelry and professional equipments, bringing in cameras, going out with cameras, simplifies travel for individuals attending overseas events, medical procedures, and also on personal visits. So if this is the set of relief that we are offering, these are aimed at offering for the middle class, for the passengers, ordinary citizens. It is not for those big travelers or high net worth individuals. Sir, similarly for MSMEs, sir, we have said, we have taken there are two principles which I would want to put up front. For dealing with MSMEs, we take this approach, penalize first. Don't take them to criminal courts or whatever, just whatever you penalize them, relieve them of what they, actually we are moving away from penalizing first and giving them the relief, And then later, one more thing I would like to say is we are facilitating first, enforcing later, if necessary, that is. So that way we are taking an approach which is friendly for MSMEs. Penalties for technical defaults, like failing to get accounts audited, have been converted into predictable fixed fees. So there's no uncertainty MSMEs will have to face.
So similarly, rule-based automated process for small taxpayers have been brought in to obtain a lower or nil deduction certificate online itself. So there are very many more which I can list out, but the fact is individuals or MSMEs have been given more facilitated treatment. So for strengthening agriculture, fisheries and the cooperatives, there are several measures in this finance bill. Primary cooperative societies, sir, enjoy deduction for supplying milk, fruits and vegetables to their federal cooperatives. This budget or this finance bill also expands that deduction to include cooperatives supplying cattle feed and also cotton seed, recognizing the integrated nature of rural value addition. To build stronger cooperatives, and particularly cooperative federations, inter-cooperative society dividend income has been made tax deductible. So, under the new tax regime, provided it is further distributed to members. So, if the federal cooperative is going to pass the dividend further down to its members, under the new tax regime, this treatment will be offered. Furthermore, a 3-year tax exemption has been granted to dividend income received by notified National Cooperative Federation. All this is going to help small members in the cooperative societies. And similar treatment is being given by Indian fishing vessels in the exclusive economic zone or on the high seas. They will now be completely free of customs duty. So we want to facilitate first and enforce the law, if necessary, much later. That will simplify lives for cooperatives, fishermen, individuals, and so on. Sir, on the cesses and surcharges, sir, every session we have this question of why should cesses be collected, why should surcharges be collected, and because it remains outside of the divisible pool, it's not doing justice to the states. So the constitution makers knew what they are doing, and we all pay respects to them. There is a provision for levying cesses and surcharges which is given to the central government. We are using a provision which is legitimately provided by the central government. Now add that also into the divisible pool. No, there is a provision for us to use it, we will use it. Just as there are several provisions given to the states to levy tax on certain items which has nothing to do with the divisible pool. Do we question that? No. And therefore, repeated allegation that you're collecting cesses and surcharges, it should actually be going, oh, sorry. Please read the Constitution again. We are allowed to do it, and we are doing a legitimate thing. But having received it, having collected it, are we not spending it only on the states, providing hospitals, schools, and laying the roads? In fact, I have said this every time, I'm saying it now, again, more than what is collected as cesses and surcharge is what we spend under schemes to the states. I'll just go reading the numbers, and I hope the members will understand those collected cesses and surcharges are not lying with us, it's actually going to the states. Sir, Samagra Shiksha midday meal scheme, implemented through state governments, financed through the Health and Education cess. National Food Security Act, center bears the bulk of the cost, states distribute. National Health Mission, even in the recent supplementary demand for grants, which is passed in this House only a few days ago, 11,627 crores was transferred to PM Swasthya Swaraksha Nidhi to meet NHM expenditure. So, resources from many cesses are 100% transferred to states,
In fact, if it was part of the divisible pool, they would only get 41% of it. So I want to underline the fact that they are getting, in fact, 105% utilization has happened. We spend more than what we collect. Example, in the last 6-year period, 2019 se lekar 2024-25, the cumulative utilization of cesses has exceeded the collection. कितना कलेक्ट हुआ, कितना उनको भेजा गया? 15.14 lakh crores पे collected. कितना भेजा गया? 15.97 lakh crores have been sent to the states under various schemes. So more than what is collected under cesses and surcharges is being spent, and I think repeatedly raising doubts about you put it in the divisible pool, not realizing not 100% will reach you, only 41 will reach you, is just making a lot of noise without understanding the details. Similarly, sir, health and education says 74,000 crores extra has been spent over and above what has been collected under cesses and education and health cess. What was collected, sir? 7.03 lakh crore was collected, and that is between 2014-15 to 26-27. Against this, the total utilization stands at 7.77 lakh crore, 7.3003, almost just 7 is gone up to 7.77 lakh crores, 74,000 crores extra. I think these replies should dispel the doubt about cess and surcharges. Sir, again, a very important point which was raised by Dr. Amar Singh. Data centers lack requirements for localization, employment and technology transfer. So giving them tax holidays is not good at all, is the observation of Dr. Amar Singh. I want to highlight, sir, the 26-27 budget has designed its tax holidays with structural conditionalities and complementary skilling initiatives to ensure domestic value creation happens. The tax holiday until 2047 is available only when the foreign cloud provider utilizes data center services located in India, meaning the physical infrastructure must be built and operated domestically. This guarantees that construction, operation, maintenance operations, and also the jobs largely stay local. And also all sales to Indian users must be routed through an Indian reseller entity, creating an entire ecosystem of Indian system integrators, managed service providers, and telecom partners who capture value and employment locally. So this is absolutely clear, and therefore this tax holiday is going to bring in investment, keep them here, create jobs here, and utilize data services here, and then also export. So it's not as if this is all for somebody from outside and nothing for us. Even the safe harbor rule given in the finance bill ensures genuine Indian operations. The 15% safe harbor margin on cost for resident Indian entities providing data center services to related foreign companies ensures that Indian operations are not hollow shells but retain meaningful profit and build genuine technical capability. So this guarantees that Indian entities are adequately and compensated for real work performed by local professionals. So Dr. Amar Singh should remove that doubt from his mind. In fact, one more point that I would add, sir, $70 billion in data center already underway for investment, and India's cloud capacity projected to grow 4x or probably 5x by 2030. The sheer volume of construction
cooling infrastructure, power management, cyber security, and network operations demanded will generate lakhs of direct and indirect jobs in India. So I can't find Honorable Member Arun Nehru, probably I don't need to respond to him, but I was shocked when he said GST rate decision. Because it's an important question on GST, sir, and for the benefit of the rest of the members also, I will say a few things. Because he says the GST cut was done in September 25, which was intended to create economic buoyancy and increase spending. It did not work as expected. I'm shocked at this observation, particularly coming from a member of parliament from Tamil Nadu, because retail passenger vehicle sales jumped 26.1, the highest ever sales for any February month since after the GST has come in. The Chennai Sriperumbudur Varagadam automobile corridor, stretching 60 kilometers through Kanchipuram and Tiruvallur districts, that is called the Detroit of Asia. By this increase in passenger vehicle sales, this region is going to benefit. And didn't the member realize that rural PV sales surged 34%, passenger vehicle sales surged 34%, and urban surged 21%. Second, he also said, sir, I continue my reply, two-wheeler sales rose 25% after September GST Council's decision. Again, Royal Enfield state-of-the-art manufacturing facility is at Varagadam, which is in Tamil Nadu. The jobs are going to be created there because of the increased demand. The motor companies which are in Hosur and Sriperumbudur are all earning, and they are doing overtime shifts for their workers. This is not going to be unnoticed. As it's flagship company, sir, with 28 assembly lines capable of producing up to 4 million bikes a year. That's located in Tamil Nadu. And this has benefited them by the increase and surge in the demand as a result of GST reduction. Similarly, every Jupiter scooty, every Apache bike, and every classic 350 motorcycle which is sold is being bought across India's villages, and that comes from this honorable member's own state. Madurai, again, a production center for tractors, 36.4% increase in tractor purchases. I'm sure the member has just sort of uttered something on my face to say, oh no, nothing happened after GST. I wish he just goes back. And in fact, cement purchase has gone up. Cement production itself has gone up by 9.3%. And my team was surprised because, they said, ma'am, Ariyalur is just next door to Honorable Member's Perambalur constituency. Just next to his constituency, cement production has gone up by 9.3%, and Shri Arun Nehru ji didn't even know anything about it. And GST collections, ma'am, sir, in December 2025, 6.1% year-on-year increase, that is post the September reduction. January 2026, 6.2% year-on-year growth. February 2026, 8.1% growth year-on-year. And for the current year, 25-26, it's gone to 8.3% growth. So the facts are very different from what he has said, and therefore I would want the member to recognize. And I went further to see how much Tamil Nadu has got out of this GST growth. Sir, December 2025, 8% growth in Tamil Nadu's GST revenue. January 2026, 5% growth after the correction in GST.
February 2026, post settlement of SGST for Tamil Nadu, the revenues have grown 18% year on year. Tamil Nadu GST has benefited them post the September reform GST 2.0. So the collection is going up and the state has benefited by getting more because of the cut in the rate. So again, I'm sorry to concentrate on this one because it's very important to know that some of the allegations, some of the complaints are just sheer baseless. One of the accusations was the government introduced PLI, especially in electronics. The minister was here a few minutes ago to promote self-reliance. While the intent is good, the outcome needs examination, he says. I'm really surprised, sir. And he further added saying, we must invest in upstream manufacturing as well. Upstream manufacturing is what has happened in India along with other sides also. Again, in semiconductors and electronics, overnight changes cannot be brought in, sir. China took 25 years. South Korea took 20 years. Taiwan semiconductor ecosystem was built over 3 decades. And actually, the member said about upstream investment, 76,000 crore is committed for semiconductor sector. And I want to put it on record so that when the honorable member sees, he will understand. And if indeed PLI was not productive, it was only assembly, it didn't give jobs, it was just manually putting all things together and so on. So why didn't Tamil Nadu reject the PLI-based investments which came there? For instance, there are companies which went and registered and started manufacturing in Tamil Nadu. And equally, when others went to other states, like when they went to Gujarat, Micron went to Gujarat, they started states, गुजरात में क्यों जाना है, तमिलनाडु में इन्वेस्ट करना है पीएलआई के साथ। एक तरफ आपको दूसरी स्टेट में पीएलआई के साथ साथ जब कंपनियां जाते हैं आप शिकायत करते हो, दूसरी तरफ आप बोलते हो पीएलआई से कुछ नहीं होता है, सिर्फ असेंबली होता है, सिर्फ इससे जॉब्स नहीं क्रिएट होते हैं। फॉक्सकॉन गुजरात, माइक्रॉन जब गुजरात गए शिकायत था तमिलनाडु में, टाटास जब धोलेरा में गए शिकायत था तमिलनाडु में, फॉक्सकॉन एक्सपेंशन के लिए कर्नाटका में गया शिकायत था तमिलनाडु में। पीएलआई से अगर फायदा नहीं है, वो जहां भी जा रहे हैं आपको क्या आपत्ति है, मगर जब गुजरात गए तो आवाज, कर्नाटका गए तो आवाज, शिकायत के रूप में आवाज उठाने वाले तमिलनाडु मन बनाना चाहिए कि इससे फायदा है कि नहीं फायदा। इधर आकर एक शिकायत मगर उधर नहीं आया तो शिकायत, ऐसे नहीं चलेगा सर। कर्नाटक में क्रेडिट लेते हैं, हम नहीं दिया है। हाँ, फिर सर पीएलआई सिर्फ असेंबली, जैसे मैंने बताया शिकायत एक और इधर आकर के पीएलआई से कुछ फायदा नहीं है, ऐसे करना राजनीतिक दृष्टि से करते हैं। विषय समझ में आते हैं उनको मगर फिर भी राजनीतिक। जैसे सर मैं इससे कनेक्टेड नहीं, मेंबर भी नहीं है मगर विषय में बोलना चाह रही हूँ। कल चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ विमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर, क्या करना है, ऑल पार्टी रखना है या कुछ, ऐसे चर्चा हो रही है। तमिलनाडु से तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इसको आपत्तिजनक बोला है एंड ही प्रोटेस्टेड दिस विमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ। इट्स अनफॉर्चुनेट सर, this house, I'm so happy the new parliament started with reservation for women's reservation bill, and now when the discussion are happening, Tamil Nadu chief minister udhar se he says no, I'm against it, whereas these jobs for the PLI, now I'm linking PLI, the PLI related units give jobs largely to the women. Young girls from rural areas are coming, getting themselves trained and they're manufacturing. You don't want that PLI, which is favoring women. You don't want Mahila Reservation Bill, which is favoring women. मैं एक लाइन तमिल में कहना चाह रही हूँ सर, तिमुका पेन विरोधी।
They are against women. Tamil Nadu is, DMK government is against women. You don't worry, you don't get up to support, ma'am. You cannot. The member said it here, that PLI is against it, and I will therefore reply. I like the India Alliance, which is fighting in one state against one another, standing up in unison here to defend their DMK. What a shame. What a shame. You should go in. No. I will say it. I kept saying, if he wanted a reply, he should have been here. No way. I'll sit, sir, with your permission, I'll sit down, but I will like to reply to each one of these members who are now standing to defend. And I'll say why. Each time when I reply, DMK members don't sit here. This is not the first time. ये पहले बार नहीं है. இது முதல் தடவையா நடக்கல. தமிழ்நாட்டு விஷயத்தை நான் இங்க பேசினா தமிழர்களுக்கு பதில் சொன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மெம்பர்ஸ் இங்க இருக்கிறது இல்ல, ஓடி போயிடுறாங்க. So is with TMC. So with TMC. Trinamool Congress never sits here for my reply. In fact, yesterday a senior member, Saugata Rai, said she will snap at me. Reply is snapping? I take objection to the word he used. His reply giving a snapping at a member, senior member, so I keep quiet. No way. When people raise issues in this house, they will have to be here for reply, and if they are not here, don't give me lessons on etiquette saying he is not here, don't give reply. Why will I not? You give false allegations against us. क्यों सर? इतना क्यों? कांग्रेस वाले भी बैठते नहीं है. आज अचानक मैं देख रही हूँ 10-15 लोग जवाब देने के समय नहीं रहते. धर्मेंद्र यादव जी आप बैठिएगा प्लीज सुधा आप बैठिएगा. आपकी बात चर्चा नहीं हुई, आप बैठिए. सबके लिए खड़े हो रही है सुप्रिया सुले. वास्तव सुनने का साहस रखो आप लोग. सुप्रिया को आप बोलो मैडम, सुप्रिया को बोलो मुंबई में कुछ. Honorable Minister, you may continue. Please sit down. No, please sit down. We heard you. No, please sit down. No, please sit down. Sir, I fully appreciate Honorable Member Supriya Sule, sir, who defends all our comrades and alliance partners. But here, she comes here, but in Mumbai, कुश्ती हो रही है. इधर आकर के नूरा कुश्ती और सपोर्ट. इधर दोस्ती, उधर कुश्ती. What? Oh, really? So, okay. No, you fought against the Congress party. No, you fought against the Congress. Haven't you fought against the Congress? Sir, I'll go on, sir. So, please continue. Sir, therefore, ma'am, you please sit down. Sir, no. So I'll come to the specific points. मैडम ने नाम लिया है और वो खड़े होके बोल दिए भी, हो गया है. So I'm coming to the point, sir. The scale of action matches the scale of the problem. Amount locked in litigation. Sir, amount locked in litigation is enormous. Additionally, 27% of all central government litigation is from the finance department, is one of the observations made by honorable members. I just want to highlight the fact, sir, that the new Income Tax Act 2025 will prove to be helpful in this regard, because this comes to effect from 1st April 2026. The Act simplifies languages, reduces forms, and is designed so that
the average taxpayer can understand their obligations and without professional help, they can themselves do it. So the monetary threshold for filing appeals have also seen some enhancement. So the monetary limit for filing appeal to the ITAT, High Court and the Supreme Court have all been increased. Income Tax Appellate Tribunal earlier had monetary limit of 50 lakh. The present monetary limit is 60 lakh. High Court, earlier it was 1 crore and now High Court has 2 crores. So we've enhanced the limit. Supreme Court had earlier 2 crores and now it's 5 crores. Sir, expansion of updated return framework will also help the assessees. Time limit for filing updated return increased to 48 months. Updated return via the Finance Bill 2026 has been allowed even after initiation of reassessment proceedings. And then Finance Bill also has said updated return has been allowed for reducing the loss in the updated return which was filed earlier. They can correct it. Sir, increase in the limit of disputed demand of cases which can be disposed of by the JCIT appeals has also been increased from 10 lakh to 25 lakhs. So with these kind of changes which are brought through this Finance Act, we are making it easier and greater ease of doing business for businesses and also for taxpayers. Sir, now that Honorable Senior Member Saugata Roy is talking, sir, he said increasing capital expenditure without distributive justice is unfair. I want to just say, sir, if distributive justice is really the concern of the senior member, I would like to ask him as to why the TMC is acting in vengeance and making poorest of the poor suffer. Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana was introduced in 21-22 for better schools among chai workers, tea garden workers, better school, better healthcare, better housing for the poorest and the most vulnerable sections. Assam government, which also has chai bagan, introduced it, and 293 crores have been spent on those chai bagan workers. More than 7 lakh chai shramiks from 800 tea gardens across 18 districts of Assam have benefited. But in West Bengal, 3.7 lakh chai baganer shramiker sate onyay karoche TMC. Onyay karoche TMC. They have not introduced it. Not only not introduced it, the state level committee, which was supposed to have been formed before 5 years, have not been formed. Zero implementation. 3.79 lakh tea garden workers have been denied a benefit. Distributive justice is concerning them. एकदम गरीबी में रहने वाले चाय बागान श्रमिकों को आपने जस्टिस दिलाया नहीं है. जब भी पैसा तैयार था, क्यों उसको उपयोग नहीं करा? मैं रिपीट करती हूं इस लाइन को. टीएमसी ने 3.7 लाख चाय बागानेर श्रमिकेर साथे अन्याय करोचे. You didn't introduce it. Sir. Sir, they didn't even form the committee which had to select the chai bagan workers. Sir, further, sir, PM Kisan, which is given for all the small farmers, was blocked for 2 years in Bengal. Distributive justice. Ayushman Bharat was blocked for 1.5 crore Bengali families. They may be even working somewhere else. They couldn't get the benefit of Ayushman Bharat because you denied health for them. Now, is that distributive justice? Another,
I told you about the Chai Shramik Yojana. So with all this, you are politically, because you want to do vengeance, you are hitting at the poorest of the poor. फिर you come here and say एकदम गरीब को डिनाई करके इधर आकर के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर हमारे लिए पाठ पढ़ा रही हो, वो क्या है? Sir, India Alliance, sir, since today there is a great camaraderie in this house. India Alliance parties, Communist, which is an alliance party, broke the spine of Bengal. It was an industrial hub. Communists, like the way in Kerala they have these no kukuli business, in Bengal also they did all the kind of strangling of businesses, entrepreneurs, that communists broke its spine. Now TMC came to power and the spine which was broken stayed broken. They did not help industry to come to Bengal. They, on the other hand, syndicates were operating in Bengal. And syndicates were the ones which made it difficult for people even to buy cement from somebody to build a room or to repair their houses. So they are giving lectures to us on distributive justice. Their distributive justice had one filter. Are they my party card holders? Are they my party members? Then I'll give everything to them. Chai Bagan workers are nobody's party workers. So they don't get it. They are talking about distributive justice. I'm sorry, I'm ashamed to hear it. Sir, Manish Tiwari ji, Honorable Member Manish Tiwari ji raised some questions about धर्मेंद्र यादव जी आप बैठिएगा, नहीं आप बैठिएगा, मैं आपका नाम नहीं लिया, बैठिएगा। ओके मैडम, ओके मैडम। Sir, Honorable Member Manish Tiwari sir raised some issues about the total debt and liability situation. Sir, debt in nominal terms, to speak of debt in nominal terms without a correlation with the GDP will make no sense. So, India's nominal GDP, sir, rose from 113 lakh crores to 345 lakh crores. And debt, which Manish Tiwari ji is saying, that it has risen from 56.51 lakh crores in 13-14 to 214.8 lakh crores in 25-26. But he should take into cognizance that the GDP, the nominal GDP, has also seen such growth. 113 lakh crores has gone up to 345 lakh crores, the GDP. So debt will have to be spoken after you take into cognizance the GDP growth also. Standalone debate on debt alone doesn't make difference. So then, the government has actually laid a clear glide path to bring down debt to GDP to 50 plus or minus 1% by 2030-31. That's stated in the last budget. We've openly stated and given a number as well. So Honorable Manish Tiwari ji should take that into cognizance. Central government alone, again, when you're talking of debt, central government alone cannot be responsible for debt. Actually speaking, the center state debt of 84.2% of GDP is also because the states are also coming into the picture of debt. Center cannot completely, we do sort of overlook we have oversight on them and tell them not to go on borrowing beyond their FRBM. But center alone cannot completely control state borrowing. So, I would think Manish Tiwari ji should also spend some time with his chief ministers in Himachal Pradesh, with his state Punjab, and also Congress government in Karnataka. If concerns on debt to GDP, he didn't say the GDP, but I'm saying concern of debt to GDP is an issue, and I agree all of us will have to work on it.
Manish Tiwari ji should spend some more time with Karnataka and Himachal Pradesh and help them to bring their debt down also. Sir, fiscal deficit. Thank you. The chair will tell me about it. The chair will tell any member to wind up whenever he chooses. And I don't think he needs a prompt. You're a senior. Yeah, you don't worry about it. You're a senior member. You've seen better things in the House, right? Thank you, sir. So the fiscal deficit has also come down, sir. 2020-21, even with COVID, 9.3% was the fiscal deficit. It had gone up to 9.3. From there, we brought it down to 4.3, the BE projection for 26-27. One stretch from 2021, 22, 23, 24, 25, 26, steady, not one day, 1 year, did we violate the glide path which was given in this House. We have completely abided by it, and that's why we've reached 4.3%. Sir, global comparison is also important. I would say that because it's necessary for all of us to understand. Since 2008, the world's debt has increased. The overall debt burden has increased 41%. China's debt exploded 139%. India has actually reduced its total debt burden by 4% of the GDP. दुनिया भर के देशों ने और डेट के सिचुएशन में चली जा रहे हैं. सिर्फ हम एक देश है जहां डेट को हम रिड्यूस करके दिखा रहे हैं. The US debt to GDP stands at 124%, China at 88%, Japan at over 250%. India's combined figure, the debt to GDP combined figure is 83% approximately. It is lower than most major economies and is on a declining path, and that too after COVID. Sir. ये नई थ्योरी होगा सर. बहुत बढ़िया. आपको परमिशन बैठिए दीपेंद्र हुडा जी, मैं बताती हूँ. छोटा सा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यूपीए गवर्नमेंट ने सरकार was shaken up. Global crisis COVID के समय we have retained a sense of calm and given free vaccine to all the citizens, but still that a fiscal deficit of 9.3 has been brought down. They couldn't withstand Sirf a global financial crisis which had limited impact on Indian economy. We managed even during COVID. So हुडा जी, आपके कंसर्न थोड़ा आपके समय का इकोनॉमी के समझ करके फ्रजाइल 5 सिचुएशन को ले आकर के छोड़ कर गए, डबल बैलेंस शीट, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम छोड़ कर गए और बैंकों के हालात इतना गंभीर हालत में छोड़ कर गए. आज खड़े होकर बात कर रहे हो आप, जब हमारे बैंक का हालात ठीक है, जब आपका उस समय का इकोनॉमी सर 22 months continuously, 20, आप सुनिए भैया, 22 months continuously without disruption, double digit inflation, that's their record. बात कर रहे हैं आज इधर. और ये भी मैं बताना चाहती हूँ सर, क्योंकि उनको लगता है उनके समय पर इकोनॉमी बहुत अच्छा किया और उनके रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़िया था. उनका रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली जो भी था डेट के वजह से, उनको ये बात मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट बोलना चाह रही हूँ. Actual fiscal deficit for 2008-9 would have been 7.9%.
मगर वो बुक को व्हाइट वॉश करके उनके पूरे ऋण को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बुक्स के ऊपर डाल करके 6.1% दिखाया, गलत दिखा है। एक्चुअली इट वाज 7.9 फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि पूरे उनके पैसा जो उठाए मार्केट से उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बुक्स में डाल दिया और उनके फिस्कल डेफिसिट को ठीक तक रखने के लिए। ये गलत काम हम नहीं करते और आज तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस ऑयल मार्केटिंग बॉन्ड्स को ब्याज के सहित हम फुलफिल कर रहे हैं। दे एंजॉय पुटिंग द बर्डन इंटरजेनरेशनली एंड वी आर बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द लोन। सर, मैं बात करना चाहती हूं उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग डेट सुनिए 1.34 लाख करोड़ हम इनहेरिट किए उनके ऑयल मार्केटिंग बॉन्ड्स के साथ। 2014 से लेकर 2024 तक हमारे गवर्नमेंट 1.43 लाख करोड़ रिटर्न किया, including 44,650 crores in principal was paid and total principal and interest was paid by us. इसीलिए हमारे रिकॉर्ड में उतना पैसा कम पड़ रही है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स के लिए कम पड़ रही है। पैसा कहाँ गया? इनके लोन को रीपे करने के लिए गए और इनके फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमारे ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। उनके समय के फिस्कल डेफिसिट इतना खराब रखने के बाद। सो सर, मैं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए I am grateful that you have given me this time, sir, to reply and also to respond on the tax finance bill of this year. I would request the House to kindly pass it. प्रश्न ये है कि विधेयक के विचार किए जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक का विचार करने हेतु प्रस्ताव के स्वीकृत किया गया है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। नाम माननीय श्री NK प्रेमचंद्रन, नॉट प्रेजेंट सर। संशोधन संख्या 1 माननीय श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 18 से 20।